to welcome our students to the commencement ceremony of orientation program of Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research. I feel privileged to open this event and stand here where many accomplished people who I admired and looked up to once stood. What is the purpose of student induction program? I would just describe you that what is the purpose of student induction program. Purpose of student induction program is to help new students adjust and feel comfortable in the new environment, inculcate in them ethos and culture of the institution, help them build bonds with other students and faculty members, and expose them to a sense of larger purpose and self-exploration. The term induction is generally used to describe the whole process, whereby the incumbents adjust for the assimilatize to their new roles and environment. In other words, it is a well-planned event to educate the new elements about the environment in a particular institutions and connect them with the people in it. Student induction program engages with the new students as soon as they come into the institution before regular classes alert. At the start of the induction program, the incumbents learn about the institutional policies, processes, practices, culture, values, and their mentor groups are formed. Student inductions could cover a number of different aspects that is called SAGE, S-A-G-E, S for socializing, meeting other new students, senior students, student unions, lectures by eminent people. This comes under socializing. And then associating, visits to university, college, visits to department, branch, programs of study and important places on campus, local area, city and so on. Governing, G for governing, that is governing rules and regulations, student support, etc. Experiencing, E, I earlier decided that SAGE, that E means experiencing. Subject, lectures, study skills, small group activities, physical activities, creativity and performing arts, literary activities. So this is the full form, or we can say the definition of SAGE. Now, I express my gratitude to our esteemed Deputy Director Mrs. Sanjana Mittal ma'am and Dean Academics Mrs. Saraswati Sharma ma'am for their support. Our Deputy Director, Mrs. Sanjana Mittal, is one of the most esteemed personalities. She has achieved major awards and an appreciation token in her field of work. She has more than 26 years of experience in education field. To talk about her would probably consume a lot of time because the achievements are endless. So, for the formal welcome address, I would like to call Mrs. Sanjana Mittal ma'am, Deputy Director. A very good morning to one and all present over here for today's orientation program for B.Ed Special Education students, the ones who have entered over here for the new academic session, that is 22-23. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome address on behalf of Ashtavakra family to mark another landmark of its success and achievement. On this pleasant and joyful morning of induction program, it is my privilege to welcome our new students who have just entered a new life in the field of special education. I welcome our respected chairman, sir, who's not here right now, but he will be joining us. He is an executive director of Tecnia Group of Institution. He is a man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an ideal of knowledge, experience, and inspiration to all of us. We admire his spirit of integrity with 100% dedication to the world of education. We place on records our regards to his physical presence as a valuable input to our today's event. I'm glad to welcome Mr. Karamveer Singh Jaggi, Principal and Assistant Director of NIE PVT, Dehradun. Welcome, Sir Karamveer, sir. He had made up all of us proud by his distinguished work in numerous capacities. Your presence is a reflection of importance that is attached to the commitment to quality augmentation of student education. We seek to be inspired by your gracious presence. I welcome Mr. J.C. Gupta, sir, former Assistant Director of
JYNISHT. He is a sculpture of human character. Sir, please come up on the stage. He is a sculptor for human character, a seasoned scholar and a navigator of this flagship of knowledge. Your consistent support of academics, knowledge developmental standpoint, and your sheer presence in the event has raised the overall standard of the program. We wholeheartedly welcome you, sir, to today's, that is, orientation program. I welcome Mr. Nikhil Agarwal, manager from Canara Bank, Sector 14, Rohini. He is a towering personality, very simple, with exceptional leadership qualities. He is there today with us to support all you students over there with new schemes of the bank that you can avail from time to time. Children keep on approaching me for the loan facilities, so I thought it's a wonderful day when you can all raise your queries and get it solved from him. So directly he is there with us. I further welcome Dr. H.L. Murthy sir, former Associate Professor of Bharati Vidyapeeth University. He is a man of versatile experience and our mentor. He is from Bharati Vidyapeeth University and he'll be sharing and direct contact with all the students who were sitting over there. New batch. Old batch students already know them, but the new batch students, they will be getting a wonderful experience from him. I also welcome B.K. Brahma Kumari, Santosh Didi, and B.K. Sushma Behen, both of them. We are blessed today to have them with us for enlightening our path, which has been beautifully laid down by the power of yoga, which constituted common basis for blending and development of science and spirituality. And when we have a word, when we keep on calling, from time to time over there to Tecnia Institute for enlightening our path. And I think so yesterday also you were here in the auditorium for enlightening our MBA students. So we are quite blessed to have you, Om Shanti Didi, and we like our new students also to receive a blessings from you. So I once again welcome, and at last I would also request the Dean ma'am to kindly, Saraswati Sharma ma'am, to kindly come up on the stage. And this was an official, that is, welcome address to all our guests of honor. So wholeheartedly, once again, I welcome, and we will begin. Thank you, Sanjana ma'am, to welcome our eminent personalities or our guests. Without further ado, let us begin with the functionalities for today. The event will start with lighting the lamp by the eminent personalities, our chief guest. Kindly welcome Chairman Sir, Deputy Director Sanjana ma'am, Saraswati ma'am, and HODs of all the department to come on the stage to lighten the lamp. Now there is a short performance by Department of DB, Nandini Saraswati Vandana. There is no doubt that world is full of gems, and we are having some of them here today to help us shine through today's event. With this note, I would like to extend my heartiest welcome to everyone here on the behalf of Ashtavakra family. I would like to invite Mrs. Sanjana Mittal, Deputy Director ma'am, and Dean Academics Mrs. Saraswati Sharma ma'am to felicitate our guest.
Nikhil sir, please come on the stage or dais to bless our students. Respected dignitaries and my dear students, it's my honor to be invited to this stage to speak here today. I would like to thank Sanjana ma'am for giving me opportunity to speak here today. Uh, Before I became a branch manager, I remember myself walking into these hallways and to be able to be here today. I have had my share of luck and my share of hard work in my journey, and I'm sure with your with your hard work and with your luck, you will be able to achieve a very bright future. Ashtavakra Institute is one of the most prestigious institutes in Delhi, and here you will be able to learn a lot with the help of the qualified faculty here. I represent the Canara Bank, which is just adjacent to your college. So we are just a stone's throw away, and I am very pleased to be able to interact with you here. You are today, all of you are starting a very new journey, and we will be very happy to be a part of it. Uh, Financial literacy is one of the most important aspects of our development. So banking is also one of the important part of the financial literacy. We will be pleased to support you in any of your financial and banking needs. सो ही जस्ट वांट टू से कि आपकी कोई भी स्कॉलरशिप स्कीम्स आती हैं, कोई भी आपको लोन की फैसिलिटी की, इफ़ एनी केस यू रिक्वायर ओवर देयर इज ही इज़ ऑलवेज देयर. ठीक है, आप इट्स वेरी एडजस्टेड टू द नेक्स्ट बिल्डिंग, सो यू कैन ऑलवेज अप्रोच हिम. किसी भी तरीके की आपको स्कीम चाहिए, देर आर लॉट ऑफ दैट इज स्कीम्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. ही विल बी सेंडिंग दैट इज द ब्रोशर टू यू ऑल्सो. And one more thing, one wonderful thing that he has announced us, that all of you can open your bank account with zero balance. So that's a wonderful, students, and I request all my students also that with that is on zero balance, you can all get your forms, that is, and your account open. And I think so, मैं रिक्वेस्ट करूँगी निखिल सर से कि ये आपके पास जो भी आपके स्कॉलरशिप, जो आपके बैंक के फॉर्म्स होंगे, वो आप लाके अपने बच्चों को यहीं पे अभी आपके किसी को मैनेजर को बोल, आपके किसी उधर से वर्कर को बोल के, एंड वी वांट दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन द फॉर्म्स इटसेल्फ टुडे सो दैट दे कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड दे कैन गेट देयर बैंक अकाउंट ओपन. So that's a wonderful thing for all of you students, and we are very thankful for the sir for offering us this opportunity. Moreover, any other that is loan facilities, क्योंकि number of students जो हमारे पास approach करते हैं कि उनको loan चाहिए, they are not able to fulfill the formalities of the bank. So sir has given one more opportunity to us कि अगर आपको loan के लिए कोई भी आपको दिक्कत होती है तो he is there and he is going to 100% assist you with that. कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ, इनसे बात करें, and he will get the things done. Now I would like to call Mr. Kamal Bir Singh Jaggi to bless our students. Deputy Director Sanjana Mittal ji, Dean Saraswati ji, distinguished guests and students. I was here for evaluation purpose, and my association with this institute is very, very recent, only 2 days old. But if I look back, I was at NIPVD, I was heading the TCTVH department, because of which I've been in touch with them somehow. They've been conducting their exams for diploma courses with us, NIVH, and that is why I've been here for past 2 days, evaluating the practical exams, conducting the practical exams for them. And they asked me to be a part of this function also, which I immediately agreed. And I really feel happy to be a part of this, because I had heard a lot about this institute. And when I come here and see that B.Ed special education VI also is being introduced. It has been introduced probably last year. So they are carrying forward the fresh batch now, inducting the fresh batch now. B.Ed special education VI had been there in very few universities earlier. So
Now the different governments require more and more teachers in the field of visual impairment and special education. So more and more institutes are required to really initiate these courses. Ashtavakra also has taken a step in this direction and introduced B.Ed Special Education VI. And all of you who are joining the institute must pay attention to the course and take it very, very seriously. And I must tell you, while you're doing this course, Braille is something which has to be taken very, very seriously, because you've opted to go for this course, B.Ed Visual Impairment, and if you do not learn Braille well, you will not be successful in this field. So you have to pay specific attention to Braille script, learn it very, very carefully and with a lot of interest. I wish you all a very, very bright learning here, and I wish that all of you turn out to be good students here, good student teachers, and later good teachers. Thank you very much. Now I would like to, and we are also waiting for Mr. J.C. Gupta sir to bless our students. सबसे सर्वप्रथम तो मैं अष्टवक्र फैमिली को दिल की तह से धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं यहां आऊं और आपके साथ में बात करूं। कि अभी सर कह रहे थे कि भाई ब्रेल सीखना बहुत ज़रूरी है। वो ब्रेल सीखना ज़रूरी क्यों है? ब्रेल इज़ लाइक लर्निंग अनदर लिपि। आई विल नॉट से लैंग्वेज, इट इज़ ए लिपि। कि जैसे हिंदी हम देवनागरी भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी प्रकार से ब्रेल की अपनी एक लिपि है। तो अगर आप एक नई लिपि सीख लेते हैं, यू विल बी एबल टू हेल्प children with visual impairment much more in training them and in communicating with them. Number one. Number two, सर की बात को मैं आगे बढ़ाते कहूँगा कि वहाँ पर हमको एक और चीज़, ओरिएंटेशन मोबिलिटी भी बहुत आवश्यक होता है सीखना, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट की वजह से हमको सेप्टियल सेंस ख़त्म हो जाता है। वेयर आई एम, हु आई एम तो मेरे को पता है, आई नो वेयर हु आई एम, but where I am standing in the middle of the road, in the middle of the anything, where I am. तो ओरिएंटेशन मोबिलिटी जो है उनको इस बात को जानने में मदद कर देती है कि वो कहाँ है। Now, the second B is hearing impairment. जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा उन्होंने सुना होगा कि पहले गूंगे बहरे डेफ एंड डम कहते थे, अभी उसका नाम बदल करके हेयरिंग इम्पेयरमेंट कर दिया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, nobody is completely deaf. There are people who are completely blind, but there are no one who is completely deaf. There is some residual hearing left in the person, and that can be utilized by different assisted devices. तो उनके साथ में बात करने के लिए, जैसे यहाँ ब्रेल लिपि है, वहाँ डेफ ने एक साइन लैंग्वेज का इजाद किया है। एंड learning sign language is learning like any other language. During the course of our study in secondary school or in the colleges, we learn French, German, other languages. Sign language is learning a language like that. The third disability is autism spectrum disorder. जिन लोगों ने भी यहाँ एडमिशन लिया है उनमें से कोई बताएगा कि क्या होता है? Do they have an experience of looking at a child with autism spectrum disorder? हिंदी में उन बच्चों को हम स्वपरायण कह देते हैं। Although we say that these children can be identified by the age 2 years, मगर हम लोग इनको इसमें देरी हो जाती है। I think I have got 5-10 minutes now. देरी हो जाती है। क्यों देरी हो जाती है? कि हम ये सोचते हैं ये तो ना अपने आप में खोया रहता है, और हम डिसेबिलिटी की क्योंकि अवेयरनेस नहीं है उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो
इनकी जो समस्याएं होती हैं, सबसे बड़ी समस्याएं होती है कम्युनिकेशन की। भाषा सीखने में, सुनकर के और बोलने में इनको तकलीफ होती है। दूसरी बात सोशलाइजेशन की। अभी सुबह मैडम बता रही थी कि सोशलाइजेशन एक बहुत बड़ा माध्यम होता है हमारे को ग्रो करने का, हमारे को आगे बढ़ने का। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी B.Ed के स्टूडेंट्स आए हैं, मे बी उनको पहले नहीं, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और यहाँ आने के बाद में उनका सोशल सर्किल जो है वो आई डोंट नो 150 स्टूडेंट्स हैं तो 150 टाइम्स बढ़ गया। लर्निंग डिसेबिलिटी, नाउ दिस इज अनदर एरिया। कहने लगे हम सभी को सीखने में तकलीफ होती है। एवरीबॉडी कैन नॉट लर्न एवरीथिंग। हर एक व्यक्ति को सीखने में तकलीफ होती है, मगर जहाँ यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी की हम बात करते हैं, दैट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हमारे मस्तिष्क में प्रोसेसिंग के अंदर तकलीफ हो जाती है, और उस तकलीफ की वजह से हमारे को रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आपको वहाँ बताएंगे और क्यों होती है, क्या कारण होते हैं, क्या क्या हो जाता है, कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल आता है, चाहे वो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट हो। विजुअल इम्पेयरमेंट में अभी कोई आई डोनेट कर देता है तो हमारे को फ़ायदा हो जाता है, रिकवर हो जाता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी कोक्लियर इम्प्लांट आ गया, उसको लगाने से हियरिंग नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल के बराबर हो जाती है। मगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या ट्रीटेबल है, इनका इलाज हो सकता है? पीपल से नो, सिर्फ मैनेज हो सकता है। वी कैन मैनेज दैम, मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी बच्चे की कैपेसिटी है, जो भी कॉम्पिटेंस है, उसको हम ऑप्टिमम स्टेज पर ला सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग थेरेपीज, स्पेशल सपोर्ट। उनके द्वारा हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक भी जाना जहाँ तक भी वो जा सकते हैं। अभी सेशन शुरू होने से पहले मैं और नागराज मूर्ति सर बात कर रहे थे कि 2 दिन पहले 10 अक्टूबर को हर वर्ष एक डे बनाया जाता है। कौन सा डे होता है? मेंटल हेल्थ क्या होती है? व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इज नथिंग बट फीलिंग, इट्स ए फीलिंग। कोई पूछता ना कैसे हो, बढ़िया हूं, इसका मतलब है आपका दिमाग स्वस्थ है, दिमाग के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप स्वस्थ हैं। मगर अभी हम सुसाइड की बात कर रहे थे, तो वो सुसाइड क्यों होती हैं? सुसाइड होती हैं बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द पेरेंट्स। हमारी जो देखभाल करने वाले लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, जो भी हमारे घर में हैं, उनकी एस्पिरेशंस होती है कि तेरे को 12वीं क्लास के अंदर 90% से ऊपर नंबर लाने हैं। नहीं आया तो देख लियो तेरे का क्या हाल करता हूँ। पेरेंट्स अक्सर ऐसे कहते हैं, दे थ्रेट द चिल्ड्रन, जो बिल्कुल गलत है। अरे भाई, बच्चे की योग्यता को परखो ना, बच्चा क्या चाहता है, क्या उसकी कॉम्पिटेंस है, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ने दो ना, वहाँ सपोर्ट करो आप। बजाय हम चीज़ों को ला देते हैं और वो बच्चा क्या होता है, उससे एंग्जाइटी बढ़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ने से डिप्रेशन बढ़ जाता है, डिप्रेशन से अलविदा कह देता है और चला जाता है। और ये ज़्यादातर काम कब होते हैं? जब हमारे रिजल्ट आने वाले होते हैं। 12वीं का रिजल्ट आता है ना, जैसे 28 मई को शायद आता है या 28 जून को आता है, तो उस समय पर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो क्यों मैंने यहाँ पर ये बात कही? वो इसलिए कही कि व्हेन यू विल कम अक्रॉस आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स और ड्यूरिंग द कोर्स, आप बहुत सारे बच्चों के साथ में आएंगे, तो वहाँ पर हमारे पास में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि बच्चे की क्या योग्यता है, बच्चे की क्या कैपेसिटी है, क्या कॉम्पिटेंस है, क्या क्या वो कर सकता है। उतना कराने के बाद में उसको हम एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं। जब वो एक स्टेप कर लेता है तो दूसरा स्टेप आगे ले जा सकते हैं। तो इट शुड बी ग्रेजुअल, एक साथ हमको थोपना नहीं है। मैडम इंडक्शन की बात कर रही थी, बहुत सारी बातें कहीं। मैं सिर्फ इंडक्शन में एक ही शब्द का प्रयोग करता हूँ, स्वागतम। तो
जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं बीएड में अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर आए हुए हैं, मैं उन सभी का विशेष शिक्षा के क्षेत्र में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये क्षेत्र जहाँ पर है इसकी ऊंचाइयों को आगे बढ़ाएंगे आप, इसको आगे लेकर के जाएंगे, इसमें अच्छे अच्छे आयाम, अच्छे अच्छे स्टेप्स उठा करके इसको ऐसा बना देंगे कि लोग बाग कहें यस दिस इज़ आल्सो ए फील्ड। सिर्फ ये नहीं है कि भाई आईटी में जाना है या एमबीए करना है या सीए बनना है, ये हम लोग हैं, हमारी मेहनत है कि हम इस फील्ड को कितना उजागर करते हैं, कितना आगे ले जाते हैं, एंड वी अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल। अभी एक बात और हो रही थी कि अध्यापकों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दिया है कि एवरी स्कूल इन इंडिया शुड हैव स्पेशल एजुकेटर्स। थैंक्स टू अष्टवक्रा फैमिली कि ये हर साल लगभग 600 के करीब बच्चे, 600 के करीब स्पेशल एजुकेटर्स एट डिफरेंट लेवल्स निकाल देते हैं। अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो एक कोर्स के अंदर, डिप्लोमा कोर्स के अंदर 35 का इनटेक है और आरसीआई के अनुसार अगर हम देखें तो 625 के करीब संस्थाएं हैं जो डिप्लोमा कोर्सेज चला रहे हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितने हो जाएंगे। 40 के करीब कॉलेजेस हैं अंडर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो डिफरेंट बीएड प्रोग्राम चला रहे हैं। हर एक बीएड प्रोग्राम के अंदर 30 लोगों की एंट्री होती है तो कितने हो जाएंगे। एंड देयर आर नियरली 11 यूनिवर्सिटीज़ विच आर रनिंग कोर्सेज इन डिस्टेंस मोड। दूरस्थ शिक्षा के अंदर वो कोर्सेज चला रहे हैं और हर एक यूनिवर्सिटी को जितने भी कोर्सेज चलाती हैं उनको 500 सीटें प्रत्येक कोर्स में अप्लाई की गई हैं। जैसे मान लीजिए B.Ed HI करना है तो B.Ed HI के अंदर दे कैन रजिस्टर 500 सीट्स, तो कितने हैं। अगर हम नीड की देखें 2021 में तो हमारा जनगणना हुई नहीं, सेंसस हुई नहीं, मगर 11 के हिसाब से 2.61 मिलियन बच्चे जो हैं वो डिसेबल्ड हैं। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रन आर इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो उन बच्चों के लिए हमको कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी। यहाँ एक और बता दूं कि टीचर्स डॉट रेशो जो है वो कुछ डिसेबिलिटीज़ के अंदर 1 to 4 है, कुछ डिसेबिलिटीज़ में 1 to 1 है, कुछ डिसेबिलिटीज़ में 1 to 8 है, कुछ में 1 to 5 है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं एक हिदायत ये करने वाला था कि भाई आपने ये तो ऑर्डर कर दिया, आपको ये भी करना चाहिए कि हर एक राज्य सरकार अपने राज्य में कम से कम 2 या 3 स्पेशल एजुकेशन के कॉलेजेस खोले ताकि हमारे जो विशेष अध्यापक हैं उनकी संख्या बढ़ जाए। दे आर मोर एंड मोर इन नंबर्स। और जो हमारे बच्चे हैं आर चिल्ड्रन ना द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनको हम उचित मदद कर सकें। तो वंस अगेन आई एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू संजना मैडम, सरस्वती मैडम एंड अष्टवक्रा फैमिली। तो एक बार फिर पुनः मैं सभी का वेलकम करते हुए और धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच। अब मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर नागराजन मूर्ति को टू ब्लेस आवर स्टूडेंट्स। I welcome you all on behalf of Ashtavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research. And my name is Dr. H.L. Nagaraja Murthy. I am clinical psychologist of this institute. I have about 16 years of industry experience and 17 years of academic experience. I belong to Mysore and I did my graduation, post-graduation and MPhil in clinical psychology and PhD in clinical psychology. And then I had an opportunity to work as an internee in National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore. For a year, I learned various skills in testing the psychotics and neurotics patients. And then
I appeared for civil service, but I could not qualify the main exam. Then I switched over to UPSC's recruitment session, where I got an opportunity to serve as clinical psychologist in Rehabilitation Center for Physically Handicapped under the Ministry of Labor, Employment and Training. I worked there on ad hoc basis for 2-3 years, and then I switched over to journalism. I was a journalist in Times of India for about 16 years, joined as a trainee sub-editor and rose up to the level of chief news editor. And then I left for academics in 2003, where I worked in IILM and Indraprastha University, Rukmini Devi Institute of Advanced Studies as a dean and assistant professor, and Bharati Vidyapeeth as an assistant professor and associate professor also. And now, in the last leg of my academic journey, I joined Ashtavakra as a clinical psychologist. My basic duty responsibilities include testing the mentally handicapped, mentally retarded children, and to assess their psychological traits by 3 methods. One is observation, second one is testing, administration of tests, and third was interacting with their parents. On the basis of these findings, I will prepare psychological assessment reports, and which will act as a ready reckoner for their future endeavor. And now, in case if anybody is willing to have my psychological counseling, my office is open. Anybody can come and discuss with me. I will counsel them, because it is a moral duty of myself not to allow any student to get disappointed or inferiority complex, etc. So I will be there for you. Anyway, anybody can come and discuss with me. And Ashtavakra is a pioneer institute, self-financed institute all over northern India, and it is running under the stewardship of the great visionary Dr. Mrs. Kusum Gupta, and its chairman is Dr. R.K. Gupta, who is a great visionary, great philosopher, and a philanthropist. With these words, I will end my address. Thank you, and I hope your stay in this institute will be supportive, informative, productive, and at the end of your course, you will take home the vast resource of knowledge, and both theoretical and practical, and to serve the society with interacting physically disabled, physically weak persons for their upliftment and make their life so happier in their future endeavor. With all this, best of luck. God bless you. Now, Saraswati Sharma ma'am, our Dean Academics. Your efforts in organizing academic activities not only benefited the entire student generation, but also will promulgate the upcoming generation to strive for a better future. You have always raised the benchmark for hard work and dedication in society. Saraswati Sharma ma'am has more than 2 decades of experience in education. So I would like to invite Saraswati Sharma ma'am to produce or bless our students and to produce vote of thanks. On behalf of Ashtavakra Institute, I would like to extend my sincere thanks to everyone who has joined us today. Thank you, Dr. Pabli Agrawal, Mr. Kamaldeep Jaggi, Mr. Nikhil Agarwal, Dr. J.C. Gupta, and Dr. H.L. Murthy, and B.K. Santosh Behan and B.K. Shushma Behan for gracing us with your precious time and enlightening our students with your knowledge and experience. Your guidance means a lot of our students, and we have all learned something new today. Today we had an opportunity to hear your thoughts and wisdom. Your thoughts have enlightened our minds. My gratitude to all the speakers for gracing
the occasion and sharing their opinion today. Thank you all us joining this induction program.